एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे, सर आपसे कुछ पूछना था। बोलो। सर वो बुक अवेलेबल नहीं है शॉप पे। उनको बोलो अवेलेबल कराए। सर आपने तो कहा था कि मैंने पूछा, आपने तो कहा था सर अवेलेबल। मैंने तो पूछा था उनको, बोला भी था नीचे। चलो मैं एक बार फिर से बोल दूंगा। ठीक है। ओके। सर बुक को रिलेटेड मुझे भी एक डाउट है। वो जो किप्स की वाइट वाली बुक है और ये जो ब्राउन वाली है, ये दोनों डिफरेंट है या सिमिलर है? बेटा, जो ब्राउन वाली जो उसका पेपर आया है ना, उसमें ना थोड़ा जो अपडेटेड सिलेबस आया है, जो मैंने आपको दिखाया था सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग है। जो पहले वाली है वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। गॉट इट। ओके सर। So let's start with the class. Parth, you are right. This one. यस सर। Yes, you have sent the correct book. But do one thing, just go through with the syllabus, the index as well. Okay, screen is ओके visible. सर। Screen is visible. नो सर। Now, नो सर। now, नो सर। अभी भी नहीं। ओ भाई। जी। यस सर, डन। Done. यस सर। Now let's move to the next question. Which is a challenge in computer vision? Clear audio quality, different lighting condition, weak internet connections, complex storyline. Different lighting conditions. Which is a challenge in computer vision? Sir, option B. बी फॉर बॉल। Hmm. Why we are not choosing weak internet connection? Sir, because uh, सर सर कुछ in कैमरे an बिना image we do इंटरनेट के not भी चलते हैं। sir, in an image we do not need an internet connection, sir. But the different lighting connections can change the clarity of the picture. Right. Now let's move to the सर next पर question. सर पर नाइट विजन कैमरा भी तो आते हैं सर, जो मतलब अंधेरे में कर अरे नाइट मतलब विजन कैमरा कैन कैप्चर कर नॉट लेते हैं। नाइट विजन कैमरा हर जगह तो इंस्टॉल नहीं हो सकते ना। Now let's move to the next question. How does computer vision assist in healthcare? 29. ऑप्शन बी, बाय एनालाइजिंग एक्सरे और Option एमआरआई इमेजेस। What is the option full B. What is the full form of MRI part? सर व्हाट सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? So that you can search on the Google. Na? Full form of नो MRI. सर। Full form of MRI. सर मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सर Yes, मैं बोल क्यों नहीं, मैं बोल तो रहा था। magnetic resonance. What does Sir, it? मैंने बोला. Good. किसने बोला भाई? सर प्रतिष्ठा दा। Good. Well done. So, what is the full form of PDF? What is the सर full form? What is the full form of PDF? हम बोलते हैं ना PDF भेज दो, PDF भेज दो. Do you know the full form of PDF? Sir, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। And what is the full? portable doc. Yes, it is portable document. Right. And what is the full form of OTT? OTT platforms. One time ओटी password. वन टाइम ओटीटी पास। वन। I'm not talking about OTP. I'm talking about OTT platforms. Over सर ओटीटी और ओवर द टॉप। the top. Chalo. Now let's move to the 30th question. What does an image dataset नीचे contain? फेंको जरा. मैं फेंक रही. Problem. What is Sorry, going on? sorry. Okay. What does an image dataset contain? लेवल इमेजेस। Labeled images. Yes. चलो Now, भैया। what does facial recognition do? What does facial recognition do? Identify people आइडेंटिफाइज using पीपल यूजिंग फेशियल option फीचर्स। B. ऑप्शन बी। Option B. Good. Yes,
Next, which of these is a visual input for a computer vision? डिजिटल फोटो। बाकी बच्चे नहीं जा सकते। Next, which of these, आप रुक जाओ पार्थ, आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे पूछूंगा वही आंसर देगा। Which of these can be used to train a computer vision model? So, Mr. Kyani has given the answer. Praveen has also given the answer. Divesh Gupta, you have to give the answer for the 33 question. Which of these can be used to train a computer vision model? Adrika Singh. YouTube videos. Yes, YouTube videos. Chalo, Adhika Singh will give the answer for the next question. What is annotation? Annotation in the computer vision. बोलो। Parth, please mic off कर लो. 34. Sir, may I tell? Yes. Sir, option B, Adding labels to image object. Yes. Jet. 35. Computer vision is mostly used in which field? इमेज एंड वीडियो एनालिसिस। Image and video analysis. And next, which of the following is an output for a computer vision model? प्रेडिक्टेड ऑब्जेक्ट लेवल। Predicted object label. एक मिनट, पार्थ शायद प्लीज, से, शायद से। पार्थ प्लीज टर्न कैमरा ऑन। आई जस्ट वांट टू प्लीज सही से बता किस पे क्लास हो रहा है? लैपटॉप पे, मोबाइल है पे? सर, लैपटॉप पे, मोबाइल पे? मैं फोन पे ले रहा हूँ। आंसर कहाँ से देख रहे हैं? तो कहीं से नहीं ले रहा हूँ। So then what is predicted object level? You have to define it. Define it. Your face is clearly saying that you are having two mobile phone right now. One is for the class सर and आप देख लीजिए। another is for the answers. सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आप स्कूल में लिख करवा लीजिए, मैं सारे आंसर दे दूंगा। So you have to define now what is the predicted object level. What is it? So can I try? Yeah, you can. Lovely. Sir, I think predicted object label means that when the computer vision or the model predicts a label for a object. How it is possible for the computer vision model to predict the object? Sir, why today's Basically, AI and models are if we very just talk about the predicted object level, in case of OpenCV, predicting the object level refers to for detecting and classifying something. Okay, means to say if we have already classified this image की ये इस चीज की image है, then predicted object level can be used for the output. Got it? Okay. So now let's move to the next question. Why is the training data important in computer vision? Bhakti. ऑप्शन बी। अरे, Sir, option B. it helps the model to make prediction. Good. Next, what is a boundary? आप बताओ आंसर इसका। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब ऑर्डर अराउंड डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट। क्या? सर ऑप्शन बी। किसी डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट के अराउंड तो एक बॉर्डर हो, हाँ, एग्जैक्टली दैट। बाउंडिंग हाँ, बॉक्स। बॉन्डिंग जो हमने कंप्यूटर विजन के टास्क को डिस्कस किया था फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जब तुम्हें ध्यान होगा सर जब ये आप मतलब बता तो रहे थे लेक्चर रूम में, मतलब हाँ कि एक बाउंड्री, मतलब किसी हाँ ऑब्जेक्ट का बाउंड्री है और किसी की एग्जैक्टली, नहीं है। हाँ बाउंड्री को डिस्कस जब करते हैं देन वी हैव टू use the bounding box object and object detection. For the multiple objects, when the multiple objects is there, it will only detect the boundary of the object. It will not detect the instances of the object. Got it? समझ आया बच्चे? यस सर। आएगी तो सबकी आवाज एक साथ आएगी, नहीं आएगी तो कोई नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, लेबल्ड इमेज डेटा। पार्थ प्लीज चुप हो जा प्लीज। Which of the following is ओके essential सर। for improving computer vision models? Yes, labeled image data. पार्थ अब आपको ये डिस्क्राइब करना है कि why it will be the labeled image data. But you have to describe the answer of this one.
Why it will be labeled image data? Parth. तो कैमरा तो खुलवा लीजिए। इसको बड़ी क्यों बता रही? अरे Parth, turn your camera on please. Then who is going to describe? Which of the following is essential for him? By more RAM. हाँ, yes, Swati, you can try. You raise your hand. So training data should be labeled for our image, because if it is not labeled, then the What computer is the vision will difference? not be able to identify. What is the difference between classification and clustering? Swati. Sir, in classification, we are given with an object and we have to classify it on a particular basis. Oh. Like if we are given with a vegetable, then we have to identify in a column of vegetable. And in clustering, we have to just remove an object from that cluster. So it is important for the CV to have labeled data. So Otherwise, it will not be. in which model we have to give the labeled data and which model we have to give the unlabeled data? Classification or clustering? Sir, in classification, it is mandatory to give labeled data, and in clustering, we can give both. Well done. That is why we will be choosing labeled image data. Got it? बेटा समझ आया ये क्वेश्चन? यस सर। Now let's move to ये 9th का टॉपिक आ गया, बता दो फटाफट। 9th के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया जब हम लोगों ने मैप कॉपी में बनाए थे, ध्यान है? इसी को ध्यान है। बात हीट मैप वाले आंसर बताओ। What is heat map in computer vision? Sir, option C, a temperature gauge. No. A visual map showing focus areas in an area. सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया। Okay, so we have done with this worksheet of CV. Now I'm just sharing one worksheet based on the evaluation. Okay, it is having some numerical questions, and you have to solve those questions and you have to post the answer in the class group. Okay, I'm just going to share the worksheet in the class group. Just a minute. Let me share. Evaluation metrics. However, I have shared the worksheet of evaluation. Start doing the questions. सर नहीं आई। Sir, you have shared the worksheet of? Evaluation metrics. Computer vision की तो कर ही रहा हूँ। Okay, sir. Evaluation की सर worksheet आ गई। आ गई sir. And I am also giving you the permission to click the picture and post into the class group. सारे क्वेश्चन करने हैं क्या इसमें? अभी तो दो करने हैं, मैं बता रहा हूँ। Just a minute, let me give you the permission first. अरे कौन से करने हैं? Evaluation, computer vision तो करने ही करने हैं, वो तो कर ही लिया है आप लोगों ने। Let me open the worksheet first. So there is a question in the box. First question is there. Accuracy calculation. A model made 100 prediction out of these 80 were correct. So calculate the accuracy of the model. फटाफट करो इस question. And you have to pose the answer this one in the class. I hope you all have got the worksheet.
I hope you have done with the first question. Now let's tell me what is the accuracy of the model? 80%. हाँ जी, 80%. कहाँ से कॉपी किया? खुद से. बिल्कुल सही सही बताओ। हाँ सर. पक्का? 80%. सेकंड वन, आंसर भेज। गेस्ट क्या नहीं, ग्रुप में भेज फटाफट। Yes sir. यश अभी तक आंसर नहीं आया ग्रुप में। सर सेकंड भी साथ में भेज रहा हूँ ना. बेटा ये मास्टरमाइंड कौन है? लेन सी में मास्टरमाइंड कौन है? यश। सर मैं. किस किस नाम से आईडी चलाते हैं? चलो बेटा, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। डू वन थिंग, ये दोनों वर्कशीट कर लेना एंड ग्रुप में भेज देना, ठीक है? यस सर। सर 40 क्वेश्चंस के जो आपने अभी कंप्यूटर विजन के आपने जो अभी एमसीक्यूज करवाए थे उसकी पीडीएफ भी भेज दीजिए। भेज दी बच्चे, देखो चेक करो क्लास में। Do one thing, instead of writing the questions, you can take the printout and paste it on a notebook. ठीक है? ओके सर। हाँ, लिखने से अच्छा आप उसको पेस्ट कर लो और उसको सॉल्व कर लेना उसी पेपर। चलो now let's end this class. चलो गुड नाइट, सर बाय बाय, टेक केयर। यस बच्चे। सर आपने सर वो ब्लॉक कर दिया सर ग्रुप. हाँ सर मैं भेज रहा था. चलो कोई बात नहीं, भेज देना आराम से, भेज देना। ओके सर. चलो now let's end this class. Take care, bye bye, good night. थैंक Now यू सर। गुड now you इवनिंग can सर। now वो you गुड can नाइट leave सर। by one. सर बाय. तुम्हें माइक मारे बेटा, ज़्यादा जुबीन नौटियाल ना बनो। पार्थ भाई जा रहे हो? स्वाति प्लीज गो। पार्थ।